तो गाइस, क्या तुम रेडी हो जंगल से भरी एकदम हरी भरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए? अगर हाँ तो तुम आए एकदम बिल्कुल सही जगह पर। तो गेंशिन इम्पैक्ट ने एक नया मैप रिलीज किया जिसका नाम है सुमेरु। और सुमेरु एक्चुअली एक है हरा भरा रेन फॉरेस्ट एरिया पे बेस्ड है। और एक्चुअली ये इंडिया और कोई इजिप्ट और मिडल ईस्ट एशिया से मिलजुल के बनाया गया है, इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। तो इसमें थोड़ा सा नाम वाम में थोड़ा सा इंडियन मैच कर सकते हैं। तो इसमें देख के भाई कुछ साफ होने की बात नहीं। तो आज हम एक्सप्लोर तो करेंगे सुमेरु, साथ साथ तो मैंने मेन स्टोरी है जो वो भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे भाई, हो जाएगा क्लियर। क्या बोल रहा हूँ मैं। और देखते हैं कि इस जगह पे हमारे लिए क्या क्या नए नए सीक्रेट्स हैं और नए क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने पे हम एक्सप्लोर करने के लिए वेट कर रही है। तो भाई चलो बिना किसी देरी का भाई टनल से भगते भगते जाएंगे और भाई एक्सप्लोर करेंगे सुमेरु को जो हमारा वेट कर रहे हैं। इसको आई एम सो एक्साइटेड भाई, सही बोलूँ तो भाई जो मैंने उसका ट्रेलर देखा था ना उसमें भाई इतना अच्छा दिखा था भाई सुमेरु से, मैं इसको वेट नहीं कर सकता। तो भाई जल्दी जल्दी चलता है इस सुमेरु के लिए। ओ माय गॉड, ये रहा रास्ता सब तक। तो ये यहाँ पे हेलो कंटिन्यू थ्रू द फॉरेस्ट। अरे जंगल आई गया, सुमेरु आ गया भाई डायरेक्ट। चिड़िया, इसे नहीं मारने वाला मैं, इसे नहीं मारने वाला। ध्यान दो भाई, देख लो। ओह लुक भाई, सुनो म्यूजिक तो सुनो, सुनाई दे रहा है तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक? Oh, let's go! I'm so excited. Let's go. Our next objective should be to head to Sumeru City. और हमें सकते हमें बहन खोजना है। हाँ, archon से आके पूछना है ना हमें। Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. But even so, people call Sumeru the nation of wisdom, you know. If we can get a chance to meet the god of wisdom, maybe she can give us some हमें तो अपनी बहन खोजना है भाई। पर उससे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे फिर जाएंगे बहन को। हमें डेंडर की पावर मिलेगी। अरे डेंडर की पावर, ओह डेंडर की पावर मिलने वाली है। लेट्स गो। तुम्हें पता है क्या डेंडर की पावर? ओह कोई आ गया। We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Okay, तो उसने तो हमें इग्नोर मार दिया भाई पाइमन। Did they not hear Paimon? Hey, you over there? उसे पता भाई तू annoying है इसलिए वो आ नहीं रही तेरे पास। ओ ओ भाई ये क्या है? हाँ करके चले गए तो। What's going on here? There's no way she could have missed that. इग्नोर कर रही है पाइमन को। Wait, could she be ignoring us? Yes, अभी जैसे चला। और मैं भी देर से रीजन से इग्नोर डस क्योंकि पाइमन इतना चपड़ चपड़ करके ना डर गई होगी। तो भाई हमें बंदे खोजने की हमें यहाँ की जो आर्कन है डेंड्रो आर्कन वो कहाँ मिलेगी? थ्रू मिस्ट एंड स्मोक ऑफ डार्क एंड समथिंग आई मिस दैट कंप्लीटली। ओह पैराचेस्टिस लैंड का भाई। और हमें वो स्टैचू ऑफ द सेवन चाहिए। और ये क्या है? ये चमक है इसमें मैं करूँ क्या? वही एरिया देखो चारों तरफ का पूरा बड़े बड़े पेड़ पौधे जंगल झाड़ी एकदम वही रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है सही में। तो इसमें करना क्या है? टी कारास चाइल्ड, कारा क्या होता है? अरे मैं अटक गया भाई, कारा चाइल्ड ठीक है मैं अटक गया था। बूम लेट्स गो। डेंडर की पावर नहीं मिली तुझे? मिल गई शायद तक नहीं मिली है। इसका भी है, मेरे को बदलना पड़ेगा डेंडर को पावर देने के लिए। ओह मशरूम्स, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दूसरी टर्न राउंड। अच्छा ये शायद तक मेन क्वेस्ट का हिस्सा नहीं होगा। अभी इसका आवाज़ नहीं, मुझे लगा भाई ये गेम वाले ने आवाज़ बिगाड़ दिया। 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा था क्योंकि उससे पहले मेरे को 2 सेकंड देना। मैं ले ले भाई डेंडर की पावर। ओहो डेंडर की पावर मिल गया अपने ट्रैवलर को। लेट्स गो। तो अब हम पेड़ पौधा मार पाएंगे किसी को। तो हमें इससे क्या होता है? अरे भाई नॉर्मल ही है, चलो कोई बात नहीं। अब भाई वापस अपना जो कैरेक्टर खेलते हैं वो ले निकाल लेते हैं क्योंकि मेन क्वेस्ट भी करना है हमें। पक्का ये इल्यूजन थोड़ी ना, पता चल रहा है इल्यूजन हो ये। ओके वाटरफॉल के अगल बगल से कुछ किया है उसने। ओके I thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? क्या भाई जज कर रही है? What should we do now? Do we try asking her for directions again? Sure, let's give it another shot. All right then. It's not like we have anyone else we can तपस्या कर रही हो तो? Even if she's not very friendly, we just need her to point us in the right direction. नहीं पाइमन खाना अभी नहीं, बाद में खाएंगे वो।
It's coming from that sensor over there. Maybe living here wouldn't be too bad after all. ओ क्या हो गया इसको? क्या हो गया ट्रैवलर तेरे को? Huh? What's the matter? You don't look too good. The smell it's क्या हो गया? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. I got to get out of here. क्या हो रहा है इसे? सुगंध से ओके ओके बेहोश होने वाला है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on. ओके हम सो गए, नींद आ रही है हमें। 100 साल से हम सोए नहीं थे ना एक्चुअली, इसलिए। What the hell, मैं कहाँ गया ये? सस्ते नशे हो गए, लगता है मुझे नशे हो गए भाई। पक्का उसमें नशे वशे वाला चीज़ें तो नहीं ना जिससे हमें नशे हो जाए सुनते ही। लग तो रहा है भाई ये क्या अजीब सा चीज़, वैसे ही लग रहा है मुझे। ये कौन सी जगह है? एकदम पेड़ है बड़ा सा एक। मुझे उसकी याद आ रही है यार, क्या बोलते हैं ये पेड़ देख के? एल्डर रिंग की। एल्डर रिंग मैंने खेला होगा, पता ना, उसमें एक बड़ा सा ऐसी पेड़ होता है एल्डर ट्री करके, मतलब बस मान लो पीला कलर का कर दो और थोड़ा सा बहुत बड़ा ओके। कांड हो गया हमारे साथ, सपने में सपने में पक्के सपना है, मैं मानता हूँ सपना है। ये पाइमन होते मेरे साथ। ये पेड़ है कौन सी जगह वैसे? है कहाँ पे? और ये अर्ड ट्री से जल भी रहा है लॉल। सही अर्ड ट्री जल जाता है, ऐसे ये जल ही रहा है। ओके अरे भाई ये अर्ड ट्री आते हुए एल्डर रिंग इसमें भी चलो होगा, एकदम मस्त बॉस दे देंगे बड़ा सा। The traveler's been out for a long I know, time yeah. now. Come on. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. Okay. If he says that he's Hey, going to be Koli aa alright, gayi. then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness, Traveler, you're finally अगर जिसने गेंशिन का मांगा नहीं पढ़ा ना उसे भाई पता नहीं होगा कॉली कौन है, सही बताऊं। Well, we're at... Good question. इसलिए तो मांगा पढ़ना पड़ेगा इसमें। Paimon was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. अच्छा। Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Thank you for your help, भाई। No thanks are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? No, I seem to be fine except. Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. दारू वाला पिला दे भाई, कुछ भी मत दे करो Master randomly। mentioned you should take more medicine once you wake up. अच्छा जी, वो देखो आगे तितलियाँ के वो कलेक्शंस और मशरूम्स के भी। Whoops. ले भाई हो गया काम। मेडिसिन की ऐसे ऐसे हो गई। ओह Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right, I'll get it for you once I'm finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Okay. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. किसी ने मतलब I'll be मशरूम sure खा to give लिया, him a good नजरीन। talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him मतलब मशरूम खाओगे accordingly. तो तुम्हें मतलब अजीब चीजें देंगे या तुम्हारे मजे वाली चीजें, मतलब नशे ही हो जाता है एक्चुअली सिंपल भाषा में। तो कोई नशे करने चला गया था माउंट मतलब इस यहाँ जंगलों पे आके मशरूम के। ओके So, हाँ वही चलो। how are you doing? Feeling better? Yes sir। Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. Tainari। He is chief officer over Tainari। all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, Okay। particularly meditate the कर रही थी, nearby जो भी था। forests.
While meditating, they use a certain incense known as spirit borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. Okay, meditate करने के लिए In उन्हें जला hopes रखी of थी। asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneol I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Yes, That that makes makes it very sense. good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Hallucination. Say, Edit any नहीं किया था मैं, out-of-body alternate दूसरे गेम में चला गया था मैं experiences? Or did you see anything while unconscious? दूसरे गेम में चला गया था बोलते भाई ट्रैवलर। It appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. अरे भाई बोलना भाई Further जाने देने चाहता observation? but we need to get to Sumeru city। No need to be hasty. As long as अरे you भाई have जाने the दे भाई पकड़ capacity के to रख judge लेगा जाने between देगा right भाई and wrong, I किधर पर है promise किधर that you'll चलिए। understand the gravity of the situation once I explain Okay भाई everything क्या है to बता you. जल्दी Based बता। on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. What do you mean If bro? you're skeptical, have a whiff of this. अरे गांजा गांजा अरे देखा देखा लाल Oh, are you okay? सस्ते से You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, मतलब ये if सुखा I दो were to ट्रैवल आप फिर गया haphazardly let भाई you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. सस्ते से The इसके लिए rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be हाँ so मतलब कोई lucky. जानवर आके फाड़ के चले जाएगा हमें Now, मतलब फ्री में I लेटे होंगे suggest you continue taking your पाइमन तो भाई medicine छोड़ each के भाग day जाएगी हमें and avoid definitely। wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? अच्छा Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for ये you. कभी ज्यादा दवाई बना के ला हम तब तक हम सस्ते से कर लेते हैं एक दो और थोड़े चले एक से Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. ठीक है ना चलो भाई रिकवर कर दो Hey! Are you even listening to Paimon? सॉरी पाइमन सॉरी 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 Paimon's over here worrying about you, you know. भाई पता है पाइमन भाई तेरी आवाज सुन के ना बेचारा भाई ट्रैवलर को और तबीयत खराब हो जाएगी Emotional, damn it! What's weird? सॉरी You भाई mean how you're feeling? There you are. Feeling any better? यो कैसे भाई जाने देना भाई जाने नहीं दे रहा बोल रहा भाई मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around. You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. ठीक है ये मुझे राइड करना है यार एक्चुअली ये राइड करने दे दो यार Nothing wrong with these two lamps. इसका नाम Let's क्या है? move to the next ones. यार तुम राइड करने दे रहे सही में यार मुझे राइड करना है Oh, this lamp seems to be getting a अच्छा, little मैं- wobbly. Let me make a note of it. अच्छा ये लैंप देख रहे हैं हम ये लाइट वाइट देता होगा ना रात में अच्छा No problems with this lamp. Good. मैंने ऑलरेडी टच कर रखा है तुम्हारा स्टैचू ऑफ द सेवन तो दिक्कत क्यों आ रही है The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road मैंने छू before. रखा है वो It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. नो निटोरिया आई एम टेरिफिक क्लाइंबर अरे भाई वो तो स्पाइडरमैन है I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukudavata or Lesser Lord Kusanali? दुख देवता Huh? Greater Lord इसको Rukudavata? देवता पढ़ेंगे देवता पढ़ेंगे बताओ गाइस Is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukudavata was अच्छा तो ये Sumeru's first Dendro पहले Archon. आर्कन था ना रुक She देवता created the अच्छा rainforest as well as the wall of Samiel around the Okay. desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. ओके ओके To the जो people of पहले Sumeru, ये she's आर्कन था उसने not पूरा only a रेन फॉरेस्ट symbol of क्रिएट किया wisdom, but also of power and kindness. ओके ओके Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. लाइक व्हाट हैपेंड टू राइडन का तो अच्छा वो बाल की बहन According to राइडन में what कटा बाल की Masters बहन told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. अच्छा To celebrate the reinstatement of their lost deity,
The sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sirastana. Sirastana. Uh-huh. Okay. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... क्या भाई? Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the अच्छा इसे भी नहीं case, पता ना then मतलब don't कुछ worry, सबके बारे में थोड़ी we पता होगा आर्कॉन के understand. बारे में सभी को जैसे कि सभी देश मतलब जोंगली के बारे में it's बहुत not कम that. लोगों को पता है I'm not trying to 20 के बारे में hide बहुत कम something लोगों को from पता है एक के बारे में ज्यादा लोगों को पता है पर Besides, इतने I ज्यादा don't लोगों consider you को two पता है strangers. वैसे सेम यहाँ पे भी है अरे ठीक है ना Anyway, you two know Amber, right? ओ एम्बर ओ मांगा से वही सही में मैच करती Wait, स्टोरी Amber? You mean... आउटराइडर भाई आउटराइडर द वाइट गर्ल आउटराइडर ऑफ द नाइट्स ऑफ फेवनियस Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a ओ lot वही during ये that मांगा time. पड़ा हुआ उसे पता You भाई could even बहुत say वो that है she helped me बहुत become मीन a करते new हैं इसका पूछना person. एम्बर के बारे में There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... भाई लगता है भाई बहुत एम्बर के बारे में भाई खुले बात है ये तारीफ के Sorry. वाओ वी हैव नेवर सीन दिस साइड ऑफ यू कॉली Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure. You really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other ओ letters. लेटर वेटर लिखते थे ना जब ये सुमेरु वापस आई In था one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating ओ बता companion. दिया उसे I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. ओके ओके मौका ने किसने चौका मारा है मतलब How you knew? Yep. So please know that you two have my complete trust. I wish I could tell you more about the Ginger Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukadevata. रुक देवा था तो पहले का मतलब डंडो आर्कन था जिसने मतलब ये रेन फॉरेस्ट क्रिएट किया है और मतलब काइंड था ऐसा है और अभी जो मतलब फॉर्मर डंडो आर्कन है वो एक नई मतलब अभी भी पैदा हुई है ऐसा बोला जा रहा है मतलब कुसनाली जिसका नाम तो इसके बारे में हमें कम पता है सभी को कम पता है एक्चुअली तो देखते हैं भैया क्या होता है कैसे मिलता है Thank you for telling me your story. अच्छा पूरा हमने स्टोरी बताई ना कि क्या हुआ कैसे हुआ Paimon said we are friends भाई ये तो है All right, we have a statue to ठीक है clean. भाई कर You देता हूँ both have my thanks. Well, you two are up there cleaning. I'll go ahead and inspect the forest canopy. तो ये स्टैचू ऑफ द सन 500 साल से पहले बना है क्योंकि पहली Do you मतलब think she's supposed to be Greater Lord Rukadevata? मैं Or भी Lesser Lord मैं भी Kusanali? लेसर लॉर्ड कुसनाली क्योंकि छोटी है ना मतलब अभी The पैदा तो name छोटे हुए does हैं seem to fit the statue somehow. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. आगे मुझे एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ये Fine, देखो but ये take देखो care of the top and you clean everything यहाँ below. जाना है मुझे शायद तक Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. ठीक है नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा अरे What पाइमन kind को of सो goodies did गई you bring? क्योंकि पाइमन को नहरा खाना मिलेगा Don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. पिज़्ज़ा I hope पॉकेट्स you पिज़्ज़ा like पॉकेट्स them. पिज़्ज़ा पॉकेट्स What? ले भाई बहुत क्लमसी है ये You dropped it on the ground. बहुत क्लमसी है मुझे पता चल गया Not to worry. कोली I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. पर कोली पता है एक्चुअली बहुत क्लमसी है जहाँ तक मुझे देखा है Paimon nearly had a heart attack there. वही क्लमसी तो है मानना पड़ेगा You enjoyed pitas together with Those pitas are Kale. amazing. You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper.
Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the मैं खाना recipe बना पाएगा खुद sometime. से. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale! It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. So, और पता है एक्चुअली मुझे ये अभी याद है कि मांगा में मतलब ये कोली का मतलब ना मिनिस्टर के साथ बहुत वो था मतलब जुड़ी हुई है मिनिस्टर के साथ एकदम मतलब जितना तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे बस ये हमें घुमाने वाली अंबर की तरह नहीं गई बहुत मिनिस्टर में जाएगी लेकिन इसका बहुत काम रोल है मेजर रोल है काइंड ऑफ मुझे पता है जहाँ तक. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. Well, there's a group called, अमू क्या होता है? अमूल दूध. Ambu something? Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a position at the academia, Higher position but वो he क्यों निकल chose to जाती stay क्यों? here बस instead as सार a का forest ऐसा watcher, helping the locals every day and passing on his knowledge to trainees. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pocket. Oh. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. प्रिंसेस की तरह. Paimon's still kinda upset though. He kept scolding Paimon the entire way here. फाइबर भी सुनाते हुए आया फिर रास्ते. तुझे मोड़ा तेरे साले यहाँ पे कुछ कहीं वैसा ऐसा. Master might have been overreacting a little. कितने बार बोला यहाँ के भाई चीजें को मत खाया करो समझते नहीं बच्चे करके. Why, oh why? Is he going to die? Probably started to get under Master's skin. बहुत ही अनोइंग हो गई. Hey! फाइबर बोल रही है मर नहीं है बचा लो इसको ऐसे करके सोच कितना अनोइंग है. कोई भी परेशान हो जाएगा. कोई बात नहीं चलो. Hey! Now even Kale's starting to laugh. That's it! Paimon won't forget this. It's time for some Paimonial rap! भाग गई देखो. No! Don't touch me! कोली व्हाट्स द मैटर. Oh, sorry, Kale. ओह Paimon didn't mean to scare ओह you. डर गई होगी समझा भाई. ये मिला हुआ है वही No, सही में पूरा मांगा से I मतलब just- स्टोरी हो रहा है फॉलो अप किया जा रहा है मांगा से. अरे सही बता तो Kale, are you okay? कंसीडर करता कि मांगा तुम पढ़ो अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं मैं बाद में बता दूंगा पर भाई इसमें नहीं बता सकता बहुत वो लंबा स्टोरी है. I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. एक्चुअली इसके पास से रिलेटेड इसलिए डर गई. डोंट टच मी बोला ना Well, मैं it's समझ getting गया. late now. इस Let's पे try एक्सपेरिमेंट back हुए to थे the एक्चुअली बताना Darwin चाहूँ मांगा में मतलब इस I पे think एक्सपेरिमेंट हुए थे Master and the others should जो be तो back by पुराने now, रुख too. देवता के मतलब आर्कॉन के जो एसेस थे वो इसके अंदर इंजेक्ट किए गए थे जिससे मतलब इसके पास अजीब से पावर रहता है और जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इसको मतलब बहुत बुली वाला एक्सपेरिमेंट का था तो ऑब्वियसली जो तुम ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट करो तुम उससे डर जाओगे जिसकी वजह से मतलब अभी पाइमोन से टच कर मतलब डराने गई तो वो डर गई एक्चुअली. ये हुआ है एक्चुअली बताना चाहूँगा बेसिकली ये हुआ है. अभी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है मुझे पता है पर भाई कहाँ गए कॉलेज. I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. बुखार चढ़ गया इतना गंदा पास्ट था उसका भाई इतना बुरा पास्ट था भाई. How could she be? Oh, wait a minute. Could it नहीं, be नहीं, because of what नहीं, नहीं. Paimon did yesterday? No, no need to worry. थोड़ी Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. ये अभी Kale has been Okay. more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation इसे elsewhere. पता है उसके पास्ट के बारे Kale में just कॉलेज के fell पास्ट के asleep बारे after में. taking her medicine. She needs some peace and quiet. ठीक है. All right, let's continue our conversation here, shall we? ओके ठीक है पर मैं इसी To पे be फोकस कर रहा honest, सॉरी. I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. ओह फेमस है. So, पाइमोन just to फेमस. clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past Okay. feats.
Instead, I am going to tell you friend because... उसके? Well, because Kale asked Oh, me बताने के to. लिए बोले, okay, let's go. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. Okay, भाई सुंदर क्यों बन रहा है? सुंदर है She मुझे नहीं insisted, पता था. saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. ठीक है, बता ना यार, So, जल्दी बता. Tainari, मुझे पता है, ऐसे पता what नहीं चलता, exactly इसको बता. is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? बहुत पुरानी की बात है, जब 5 साल पहले. Ever नहीं, 3 since साल she was a पहले. child, हाँ, 5 she's been afflicted with a disease called Elazar. okay. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. डर In its लगता है final अचानक से, जैसे stages, उसके सपने the में disease उसको strips a लगा- person जब of the उसको ability डर to लगी. control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds भाई इतना terrifying. खराब बीमार है, वैसे देखो देखो यार, कितना भाई. They will lose all control over their body. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little that's clumsy why. earlier, अच्छा, it was because... अच्छा उस बीमारी की Correct. वजह से वो That गिरा would रही be थी the चीजें. effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting So, is herself. there any cure for Elazar? With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more Okay. serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. भाई, ये तो kind of sad है यार. Nevertheless, Kale's mother still hoped there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the नहीं, Fatui यही- after यही- one of यही- their यही- members ये तो lied यहीं से तो हुआ था and said they had a cure. गलती. What? The Fatui? यहीं से तो गलती हुई Ah, थी. it appears ये you're manga already में है. familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the ओह Doctor. मांगा पढ़ना पड़ेगा I have तुम्हें no सही idea how में. this दतोरी की बात चल doctor रही है, बहुत managed to do खतरनाक था it, डॉक्टर. but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. ये पता है डॉक्टर जो है However, ये बहुत Kale's खतरनाक है. days with the बट वही Fatui were हार्बिंजर है anything एक. but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful. But her experience with the Fatui has हाँ, left that's deep why scars. PTSD हो गया था ना जब हम पाइमन Even से छूने की now, कोशिश की तो. she can still feel deathly afraid of someone touching देखा her. वही इसीलिए सही बोला था, मतलब मैंने जैसे बोला था. Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Yes, yes, सही सही. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two Wait, later. can we come along? Yeah, we'd like to do something to help Kale ये too. हमारे दोस्त अभी हमारे दोस्त All की right, मदद करनी but I पड़ेगी ना. must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for Oh. someone who's still recovering like the traveler. हाँ, You सस्ते must रस्ते follow सुंघा दिया तो closely मैं तो and listen लिपट to जाऊंगा भाई. every हाँ instruction. भाई ये तो सही है. No problemo. भाई ऐसे सही है तो Let's go सही है. then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those नीलोत afflicted with पाला. Elazar recover their नीलोत energy. पाला लोटस, लूनर लोटस, नीलोत पाला. Hey, दूसरा वर्ड Tainari, इजिप्ट वाला वर्ड where लग रहा है. exactly are we इजिप्शियन going to वर्ड. find this plant? पर्शियन वर्ड. ठीक है भाई मैं पत्ते लेके आता हूँ. Given the कमल के name, पत्ते. it's टेलीपोर्टर खोल के आऊंगा और मैं जाते जाते उधर से. क्योंकि मैं You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. मशरूम. The large petals Yeah, are mushroom actually the mushroom, plant's mushroom. leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note Mario. that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for काला example. पत्ता. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its क्या बोलना name. चाहता समझ नहीं आ रहा पर ओके ठीक है. oh, huh. पाइपॉन ठीक है समझ सकता हूँ. सेम सेम. Note to Paimon. Never bring up the
topic of flowers with Kainari. सेम समझ सकते हैं पाइमोन, कोई बात नहीं, वी आर ऑन द सेम बोर्ड। मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक जो सुन रहा हूँ, ओह माय गॉड, द बैटल म्यूजिक भी बहुत अच्छा। वही क्या है यार, ये म्यूजिक इतना अच्छा क्यों है? मैं लड़ाई करूँगा ये म्यूजिक में डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। भाई क्या करना चाहते हो कि मैं लड़ाई मतलब जब लड़ाई चलता रहेगा मैं म्यूजिक से डिस्ट्रैक्ट होकर हार जाऊँ ये लड़ाई, ये चाहते हो? मैं टेलीपोर्टर लेने जा रहा हूँ, इधर भी वो मन नहीं है बड़ी चीज। अरे यार क्रिस्टल फल्स अच्छा दिखा है सर। ओके तो हमें नीलोल पाला लाना है, नीलो तो पाला एक्चुअली। ओह चल हो गया, पता नहीं क्यों भाई, मत मारो यार, मेरे को पत्ता ले दो, नीला पत्ता। नीला होता है ना। There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be. We'll rendezvous here once you've gathered the needed. नीलो पत्ता मैं तो नीलोल पाला वाला नहीं बोल रहा, नीलो पत्ता बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नीलो पत्ता। Alright, we've gathered enough और ले lunar जाऊँगा lotuses. मैं हूँ हरामी। Let's head back to meet Kainari. रुक जा, अरे गाना क्या चल रहा है, रुक जाओ ना, कौन लड़ना आ रहा है मेरे सभी भी। घाव तक पीछे पड़ जाएंगे क्या, छोड़ेंगे नहीं मेरे पीछे बंदे। Hey Kainari, ये ला भाई तेरे we नीले found the पत्ता। lotuses you requested. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. Kainari! अरे भाई कोई आगे, तेरे दोस्त आ गए, अमीर और वो आ गए, नसरीन। Oh, Kainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going कुछ on. बताना चाहते होंगे हमें वो। इनके बाल के कट और आँख इतने वो के Kainari, ग्लूमी क्यों, thank एकदम goodness मतलब we इनके चेहरा found you में here. ग्लूमी फेस We है were एकदम। just about to head back and find ऐसा you नहीं at लग रहा मतलब Gandharvaville. सो जाएंगे अभी 2 सेकंड में, What's छोड़ going दीजिए on? अकेले। इनका चेहरा देखना, आँख देखना इनका, क्या हो गया भाई, कुछ हो रहा है। We just discovered a withering zone. विदरिंग जोन, अच्छा क्या होता है उसका मतलब? The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these 2 back to Gandharvaville. Wait, Kainari, why don't you let us help you? You 2 have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in अरे these lands. हम इस चीज के भाई There's वो है a भाई, आदत unique इस type चीजों of की, anomaly familiar that occurs चीजों in की। the Sumeru rainforest. It's called the अच्छा, withering. कुछ होता है इस फॉरेस्ट पे जिसे हम विदरिंग बोलते The हैं। पेड़ affected वेड़ जो होते हैं areas इसमें not नाम only से कैसा cause लग रहा है? nearby vegetation to wither, Oh. but it's also lethal to wildlife and okay, even मतलब- people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a तुझे क्या dangerous करा बिना place. विजन के मैंने आर्कॉन को हराया है। As Amir सही said, में। only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a ठीक है। time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across अच्छा, a withering मतलब, zone, दे we बताना first चाहता हूँ make a उनको। record of 2 the सेकंड, location अमीर रुक and जा, then अमीर have a खा जी, ranger with the proper abilities deal with it, like इसके Tainari पास विजन है here. तो ये जा सकता है ऐसा बोल रहे रुको। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब विदरिंग एक ऐसा चीज़ है ना कि मतलब पेड़ पौधा तो होता ही है, नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद जो वहाँ जानवर और वो भी मतलब मरने लग जाते हैं, मतलब अगर जाओगे तो उनके आसपास। और इंसान जिसके पास विजन नहीं वो भी मतलब चांसेस से मतलब खतरा है उस जगह से। चलो, Only someone with a vision can हाँ, venture समझ within गया। a withering zone and find a way I to might be deal able to with help it. you with this. Stop. Don't move any further. Look there in the दिखाओ distance. भाई। Where? Oh, Oh. look! Those plants have withered. That whole मतलब area is एकदम kinda gloomy. Even the air उसके looks मेरे को like उसकी याद आ it's गई, filled पता है ये with विदरिंग वाली ash. पता किसका है? Oh, अगर तुमने गेम Paimon खेला doesn't होगा like the केना द look of ब्रिज ऑफ this. स्पिरिट्स करके, उसमें भी एक सेम That इफेक्ट होता है is the उसमें। withering. तुमने अगर देखा होगा तो पता है All तुम्हें, right, अगर गेम खेला गया देखा होगा तो। We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we अरे ये eliminate those, कॉन्सेप्ट then भी the सेम है, area उसके will ऐसा be क्या नाम, safe. स्पिरिट ऑफ द फायर ब्रिज है जो भी यार नाम ही भूल गया, ब्रिज ऑफ द स्पिरिट्स। Thank सेम you. उसमें भी ऐसा होता But है I कि must वो warn तोड़ना you, पड़ता है, फिर उसके बाद वो चले जाता है don't push विदरिंग वाला yourself. इफेक्ट। This is your first और time बस handling तोड़ने this पड़ते sort हैं। of हाँ thing, दिखा after दो, चल all. चल भाई चल। Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and Okay. death. You ready then?
ठीक है, Let's go. हमें जाके तोड़ना है बस, ये हमें याद रखना है। First, we must locate any branches sustaining the withering ये zone. Scatter! ये निकलना। Take it easy. Let's light it up. क्या करना है मुझे? हेल्प तानी री, तू क्लियर दो। चार जैसा नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा। कलेक्ट डेंड्रोगाना एंड डू दिस डेंड्रो एंड अटैक विदिंग ब्रांचेस विद चार्ज। यही है ना विदिंग ब्रांचेस? अच्छा ये क्लियर हो रहा। अच्छा ये रहा बीच में, हमें देख नहीं रहा। रुक जाना, घर जाना, मार रहे होगे, कितनी ताकत हो रहा है तुम। और डेंड्रो पावर। The wind knows me. Busted. ओके हो गया। अरे हटना, हट ही नहीं रहा बंदा। और ये ले। Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. टूमर है, टूमर है। कितना क्यूट पॉकीमॉन। तो पॉकीमॉन जरा दिख रहा है। Into the wind. Quietly now. Now, destroy the tumors of the withering. ठीक है, तोड़ देंगे। क्या तोड़ना है आपको बता दो दे। Take it easy. अरे डिस्ट्रॉय करने के लिए दबाना पड़ेगा। जाना सही में वो कहना ऑफ द ब्रिज वाला फीलिंग आ रही है भाई, स्पीड ऑफ द ब्रिजेस वाली। We did it! Everything's returning to normal now! Yes, thanks to you two. We were able to quickly restore this area back to normal. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an ऐसा issue. होगा तो भाई पूरा जंगल नहीं चला जाएगा। But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. मतलब बहुत सारे अब पेशेंट को मतलब बुखार हो रहा है, क्या पता किसी ने फैलाया हो ये विदरिंग वाला चीज़ है। Is there no way to permanently get rid of the withering? No, none that we know of. ये तो दिक्कत The है। withering has been recorded in Sumeru for millennia. हजारों साल से। It's, by the जमीन के अंदर way, से। have you heard of Irminsul ना, before? क्या है वो? अर्मन्स क्या होता है? Irminsul is a tree located deep beneath the ओ, surface. वही तो ट्री नहीं है जिसे Although हम it वर्ड isn't ट्री like बोल any रहे tree थे। we know in a biological sense. You can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than ये वही तो नहीं है upwards. जो हम I'm देख sure रहे थे। you've heard of ley lines, Yes, right? yes, yes. They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the Okay. surface. Spreading starting massive cover sound like a wet I saw never seen okay Ley lines उसी की बात चल रही continually है। absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the god of wisdom because her consciousness is directly connected to Okay. it. तो It मतलब is ये also said connected that the Irminsul Dendro से। Archon's God power of is a Dendro Archon की manifestation मतलब of वो consciousness। Irminsul. मतलब And पेड़ as for जिंदा the नहीं एक तरह से। withering, मतलब its पेड़ emergence इसलिए is जिंदा होता related to है। a disease that's affecting it. stupid भाई। I know I'm stupid भाई, क्या बोलता हूँ मैं? सही में कई stupid वाली चीजें मैं बात करने लगा, कुछ भी बोल देता हूँ कभी-कभी। हाँ, you mean Irminsul is sick? That's right. Oh, जिसके वजह से My ancestors withering learned हो of और this from withering हो रहा Greater है। Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. Okay. Oh, Tainari, you all made it back. Wait, is that? वो कौन? Oh no, क्या Hypatia! पेशिया? पालतू चिड़िया है तेरी वो? मैं इसको मारने वाला था वैसे शुरू में दिखा था वही चिड़िया। पर छोड़ो बोला मैंने What's मत wrong, कीजिए। Tainari?
This duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... I prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? No unusual feeling this time. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? Yes, bhai, क्या चाहता है तुम मेरे भाई? चाहती क्या है तुम? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsul's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? What I saw weren't hallucinations over there. That's correct. Those weren't hallucinations at all. मेरे consciousness चले गई होगी. हाँ, ये तो हो सकता है possible है मेरी consciousness वहाँ चली गई होगी. When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I was right. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. अच्छा भाई बेचारी इतने दिन से तपस्या कर रही थी कि काश मैं Irminsul conscious से connected हो जाऊँ. मुझे भी भगवान के कुछ बारे में जानना मिल जाए. और हम आते हैं सुनते हैं पहुंच गए भाई हम तो हो गया भाई हमारा हम तो पहुंच गए भाई हमें मिल गया मोक्ष प्राप्ति हो गई हमें वो सोचो हम उसको बताएंगे कि भाई हम तो आ गए थे Irminsul से घूम घाम के वो बोलेगी साढ़े It's a meal I packed for इतने दिन से मैं ये कर रही हूँ तो आके 1 सेकंड में I'm ऐसे ही sure पहुंच it'll come in जाएगा handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. भाई जान दो यार मुझसे मेरू पकड़ के I should be the one thanking you. ऐसा लग रहा है ना मैं दूरदर्शन देख रहा हूँ ये बैकग्राउंड की म्यूजिक सुनो ध्यान से अगर तुम सुनोगे ना तुम दूरदर्शन मतलब डीडी चैनल दूरदर्शन जो आजकल किसी को नहीं पता होगा बहुत ही रेयरली बहुत ही कम लोगों को पता होगा आता था बहुत ही पहले भाई इसमें कार्टून वार्टून आते थे हर वेडनेसडे और सैटरडे को और उससे पहले हमेशा यही गाने चलते रहते हैं हमेशा जब भी खोलो उसमें ऐसे ही गाने चलते हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं ना हमेशा यही गाने इसके अलावा कुछ नहीं बहुत ही रेयरली न्यूज़ और इंडिया के बारे में आ जाता था फिर उसके बाद भाई सेम यही गाना मुझे बहुत गंदा नॉस्टैल्जिया हो रहा है उसकी वजह से भाई सही में क्या नॉस्टैल्जिया पे हिट हो रही है अलग लेवल पे हो रही है हेलो Hypatia भाई कहाँ चले गई Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. What was this? The sound? भाई क्या है? पर केना से बहुत मिल रहा है भाई इसका वो साउंड भी बोलो तो केना द स्पिरिट ऑफ बीजेस ऑफ द स्पिरिट समथिंग लाइक दैट और पड़ी हुई है सस्ते ने से करके अरे क्यूट मशरूम इट्स Hypatia इज ओके मशरूम कितना क्यूट सा है भाई डर में ऐसा लग रहा है हेलो अरे क्यूटी आवाज सुन इसकी मत मार यार क्यूट नहीं मारना चाहता मैं सही में लड़ेगा तो मैं नहीं मारने वाला प्लीज नहीं मारना चाहता तेरे को प्लीज मुझे बोला मत उससे मारना यार मैं नहीं मारूंगा मैं मर जाऊंगा भाई बता रहा हूँ मैं नहीं मार रहा इतने कुछ चीज़ों पे मैं हमला नहीं करने वाला कहाँ गया There you are. Hypatia, are you all right? She look famished भाई वो तो और कल 3 दिन से तपस्या get her to eat in her current condition. भगवान सही में मिल जाएगी अगर 2 दिन और मिल जाएगी तो कल Let's try finding some बताता water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden?
Anyway, let's go चलो look चलो भाई, around. चलो भाई, अब कोहरा भी आ गया। How things out here end up looking like this? हैं? ये क्या हो गया? And where are we? सस्टेन से इसके वजह से रिलैक्स पाई मत भाई, सस्टेन से। Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. सस्टेन से हो, सस्टेन से। Time to go. भाई क्या हरा भरा यार, पर जो भी बोलो। देखना क्या हरा भरा नहीं है। Wow, this place is huge. भाई क्या रिलैक्सिंग म्यूजिक है। I knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. जब जब लड़ाई करूँ ये बंदे भाई बजाने लग जाएगा अपने। तुरंत तुरंत जाना का। अच्छा ये करना है। अरे पकड़ते पानी मारने इस पे। अच्छा देखना भी होता उसके। ओके यहाँ पे मैं गलती कर रहा था। अच्छा जी मुझे लगा वो ऐसे ही आ जाएगा। टेक ऑप्शन देखो कहीं का। Time to go. ये क्या है? बड़े बड़े से ज़्यादा छोटे नहीं है। बदहील ये क्या हो रहा है? सस्ते नशे क्या नशे किया भाई मैंने? इस पर कौन से गांजा फूका है यार? ये अच्छे अच्छे नशे हो रहे हैं मुझे यार। व्हाट? क्या Huh? What happened just पता नहीं now? पाइमोन। Why'd everything around us suddenly change? सस्ते नशे भाई क्या फुकवा दिया भाई सुमेरु में आके भाई। ये जड़ी बूटियाँ फुकवाई गई है भाई हमें अजीब अजीब सी। सही बोल रहा, जड़ी बूटी तो फुकवाई गई है हमें अजीब सी। मानना पड़ेगा तो तुम्हें। कहाँ? जो भी बोलो भाई, पर सस्ते नशे तो हुआ है। बहुत सस्ते नशे हो रहे हैं इस गेम में भी। और वो करने में भाई मजा आ गया। ट्रैवलर कितना अच्छे नज़ारा दिख रहा है ना ट्रैवलर को। सस्ते नशे कोई सस्ते नशे। Clouds high. The birds. बर्ड्स डेंड्रो बर्ड मारो डेंड्रो में देखने हैं इसके बाद। तो 2500 का डैमेज। ये देखिए लाख का डैमेज। 2500 का डैमेज। और ये डेंड्रो। और ये इसका मैं करूँ क्या? फटता कैसा तू? अब फटा है 100 साल बाद। ये क्या बन गया? अच्छा जाना ही था यहाँ पे। अरे सस्ते नशे। ओ माय गॉड सस्ते नशे। सही बोला था भाई जिसने भी बोला था ना डेंड्रो आर्कन भाई अपने खुद का गांजा बना सकता है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। ओए ओ भाई क्या खूबसूरत है यार जो भी बोला। Adventure time. जब ना क्या हो गया? सस्ते नशे फिर से। अभी सैराल्ड मेरे पास क्रायो नहीं है मत आना। नहीं है मेरे पास। रो दूंगा तू लड़ने आएगा तो। सही बता रहा हूँ मेरे कुछ नहीं है मेरे पास। डेंडर नहीं ये पुराना है। अभी सैराल्ड है जो अपने बहन के साथ होता है। Abyss Herald! What are you planning to do in this सस्ते नशे strange की बात है place? तू भी मेरे साथ सस्ते नशे में। Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't. मेरी बहन कहाँ है? वैसे मेरी बहन तो गया। अरे मेरे कल सर जी कल। Gotcha. आज हम अभी एक्सप्लोर करने कल आएंगे। अब ये बहुत कमजोर से हैं। ये देखिए Adorn my. मेरे पावर आप जानते नहीं। हो गया कुछ बोला था मैं कल आइए करके। ये ले डेंड्रो साले। मैं तो मार भी नहीं सकता। मेरे पास डेंड्रो ही नहीं है। मतलब भाई डेंड्रो पर डेंड्रो को कितना यार मेरे को जाना था यार। नहीं तो यार टाइम लगेगा इसका सीट उड़ाने में। रुको ना अभी ने हो गया। आई डोंट नो हाउ। Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it! We faced others like him before! What's wrong this time? पता नहीं। Though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. बहुत ताकतवर असली मैं बोलना चाहता हूँ। Realize how weak and powerless you really are. My journey will not end here. Your sister. भाई देख के जा यार मेरी बहन। भाई मेरी बहन। Oh,
pitiful traveler. Are you really so ignorant? तुझे Or पता are है you just living in complete कि वो प्रिंसेस है तुम्हारी? तुमने क्या कर has दिया? long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. देख ट्रैवलर, मैं तो नहीं सहता. अब मेरे सामने कोई ऐसा बोले तो मैं तो नहीं Bonds of सहता. love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is देख भाई, ट्रैवलर भाई तेरी बेइज्जती हो रही है खुल के. वो भी अभी सरल कर रहे हैं. Don't you fret now. Today will be your last. Now die. आज हम मार सकता है तो बस तेरे से मैं हटा नहीं पाऊंगा. वो अलग बात है. सस्ते में से ओए सस्ते में से सस्ते में से ओए सस्ते में से सस्ते में से करके मजा आया बड़ा रे. We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, वो there तो she रही. is. Quick, let's see how she's doing. और तुझे तू मेरे साथ है. So sweet. क्या स्वीट है भाई. Well, the good news Sus- is that sus- she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? सॉरी Later. बेचारे का खाना You गिरा better है. make उठा के sure दे दे. she's मुझे all right देखा नहीं है. first. क्या पता. उठा के दे देना जमीन से. इतना अच्छा खाना वेस्ट कर रहे हो. दे दे उसको. क्या ही पता चलेगा. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. अब मैं इसका खाना बनाऊं. Tainari, is that you? ना पोकेमोन में. You too. Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. कौन सा जूस? How did you end up like this anyway? सॉरी भाई कोई बात नहीं. Really? भाई मैं ऐसा कभी कभी अजीब से I चीजें seem बोल to देता हूँ. understand now. इग्नोर मारे करो उस चीज को. All the fruit was likely from my neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Kind of like a cabbage. So you're able to see them too? अच्छा तो हमें ही दिखता है वो. ऐसा क्या? You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. भागने के लिए वो हमें सपने में फंसा के चले गए. Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. Whoa. And at that very moment, Yeah, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. नाच In रहा my है. curiosity, अरे क्यूट है I बहुत. began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. हेलो क्या They cute just है. kept doing whatever they were up to. डांस कर रहे हो. It wasn't until I Ritual. crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. उसे लगा होगा बस तो देख ही सकते हम तो नाचेंगे ये And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be भाई seen. वो नाच रहे हो I बस तो was दिख नहीं convinced रहे. they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. बहुत सारे देखा मैंने. हाँ. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. सत्यवाद Many लाइफ. researchers in सत्यवाद Sumeru हमारे भाई. have lost their अरे minds एक्चुअली तुम्हें पता while है ये तो seeking पूरा to attune with Irminsul during this जैसे इसे stage. सत्यवाद में से बस इसको एक को यहाँ पे आई कर दो ना तो एक्चुअली बंदे होते हैं मतलब सत्यवादी मतलब सत्यवादी सच बोलते हैं इसको बोलते हैं सत्यवादी. कांड ऐसे लग रहा Sages है. have said that ब्रह्मचारी Irminsul ऐसे टाइप contains का. divine तपस्वी बन knowledge, गए. हाँ and देखा देखा touching भाई such इसका knowledge भी. without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. Okay. That's why we इससे दिमाग खुल meditate जाता बोल रहा है ये alone. बनने से. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa, so knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risks, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, ये रहा अपना. I've been feeling कद्दू. better as of late.
कैबेज आएंगे। I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. आ जाओ भाई, I डरते नहीं। believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? हाँ, क्या Well, सपने नहीं it's आते हैं? strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Oh, what the hell? सपने Is नहीं that आते true? सुमेरु को किसी बंदे को, ये कैसे अजीब चीज है? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. अच्छा, इसलिए Adults, ट्रैवलर को सपने however, आए। never do. The sages say that wisdom implies rationality, अच्छा अच्छा but अच्छा। that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. सपने लॉजिक से कंप्लीट होते हैं, पर सपने लॉजिक से कंप्लीट होते हैं, पर सपने देखना मतलब लॉजिकल कई बार नहीं होते, इसलिए सपने ही नहीं देखते। वाओ, क्या लॉजिक है। Yes, मेरे समझ नहीं if आया one क्या हुआ। struggles with क्या बोला मैंने, anxieties, खुद समझ नहीं आया। though maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you अच्छा, have बताना any नहीं कि हम thoughts about सपने the देखे things करके, you saw when ये you तो हमें पागल connected बोल with देंगे Ermin's यार soul? भाई। ठीक है। Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Ermin's soul itself. ओके, अच्छा हमने कॉन्सियस कनेक्टेड हुए थे तो हमें पता है। What could that possibly mean? क्या कुछ ऐसा कांड किया होगा तिरुपति देवता ने जो चाहता है कि If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. परिपूर्ण I might have some more answers for परिपूर्ण you. परिपूर्ण लाइफ ये क्या है भाई, See you पूरा wherever सब हिंदी in पढ़ the जा रहा है, end जो again. संस्कृत पढ़ जा रहा है, Please be समझ sure to come and see me. सत्यवाद की लाइफ छोड़ के परिपूर्ण लाइफ से भी कंटिन्यू कर जाता है, ऐसे बोल दिया। परिपूर्ण क्या होता है इसका मतलब, मुझे पता है पर नहीं पता There's है। no need to be पर thanking हिंदी me. शब्द है, ये मुझे पता है, You संस्कृत two शब्द are है। my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब कंप्लीट लाइफ। ए टी द स्पाइडरमैन मत सके, स्पाइडरमैन does whatever spider can, climb the walls. Think about it, Tainari. Refusing to ये join क्या is हो रहा है tantamount to इनका? अरे burying आ your गया head in करने the वाले, sand. क्या करना I भाई? understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. अच्छा But isn't जी, it तो ये evident वापस that मतलब ले such जाने work आया is कि not चल a भाई हमारे lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, घुलम जा, घुल your जा। presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. गुलाम, Let's अरे at भाई least गुलाम ये listen तो to सही है। Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause a अच्छा जी, scene. अरे क्यों Sage नहीं Kaji. जाना ना बेचारे को। I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your एकेडमिया के invitation. सेजेस होंगे ना। I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any Haravatat. need of someone like me? अरे बता। Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come अच्छा here इनका in मास्टर वो his इसे बुलाना stead. चाहता, पर तब भी वो मना कर I रहा है नहीं जाने see. करके। Huh. वो तो हमें पता है। And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. अच्छा, Tainari, you'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. वो तो आएगा ही नहीं। And इससे how पैसा long नहीं। will I be required to stay? There's no किडनैप definite करके तेरे को आने answer नहीं as देंगे, of बच जाइए now. भाई। Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? हाँ, भड़क गया भाई अपने ताइनारी जी गुस्से में। If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. ओ, Tainari, but you... फाइट। So be it. Ghulam? Come, Ghulam, we're गुलाम leaving. जा भाई, गुलामी कर। Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. ओके, तो हम सिटी I जा सकते assume हैं। you'll be Let's heading to go, Sumeru city। City, correct? हाँ हाँ, चलो चलो That's भाई। right! We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. अरे इसे भी नहीं पता, ऐसा पता भी नहीं है, Do सही you मान at सकते least know anyone we can try asking in Sumeru हैं। City? ओ, बता भाई किसे पूछ सकते हैं? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. Maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia कुछ tool that दे रहा है ना वो। utilizes the legacy of Greater Lord Rukadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom.
Needless to say, this device and its usage fall under the academia's expertise. So I'll leave it to them to show you how to use it. Okay, ठीक है. Great! Next up, Sumeru City! We need to say goodbye to Kale. That's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. चल रहा अभी भी छूने लगे पायों मत छूना डर जाती बेचारी. I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. ठीक है. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Please take care of yourself, Kale. Don't worry about me, and I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that कोई बात needs नहीं your कोई बात नहीं. sympathy. Sympathy But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need मैं to चाहता हूँ ये एम्बर से मिले पता है मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि एम्बर से मिले कोली. मैं दोनों के इंटरेक्शन देखना चाहता हूँ इतने साल बाद ये कैसे मिलते हैं दूसरे सही में. with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. Yay, I told pita you that I'd pocket give banaenge. you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. ठीक है भाई. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Of course we will. Well then, I, Thank you, trainee bhai. Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. फाइनली हमने बना दिया भाई. तो गाइस हम जाएंगे सुमेरु सिटी नेक्स्ट एपिसोड में. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब कर देना. और सही बोलूँ तो यार ये सुमेरु सिटी मतलब सुमेरु का ये गंधर्व वाइल है भाई, घूमने में मजा आ रहा है. उनके जो नाम वाम है भाई सही में काफी जो नाम है वो मतलब हिंदी और संस्कृत से मिलते जुलते. तो भाई इसमें थोड़ा सा अपनापन सा लग रहा है थोड़ा सा. तो इसमें भी मुझे मजा आ रहा है. जब बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका लेवल ही अलग है भाई. क्या ही बोले, ऐसा लग रहा है भाई दूरदर्शन चैनल में भाई टीवी चला के आ गया हूँ. बस ऐसा बैठ रहा हूँ और पीछे से वो टीवी के गाने चल रहा है ऐसे में बस बैठा हुआ खेल रहा हूँ. ऐसा मजा आ रहा है सही बोलो तो भाई. सही में बहुत सही लगा अभी तक तो मुझे. जहाँ तक बहुत स्टोरी भी अच्छी लगी और ये चल रहा बहुत सही लगा.